I didn't even know that Cardiff was in Wales and Wales is in UK. मुझे नहीं पता था because I wasn't expecting anything. What were the steps for the job preparation? Right, a lot of people try to get a job out of Pakistan. तो आप क्या जो है वो steps ले रहे थे या क्या process follow कर रहे थे when you were looking for the opportunity? You need to be in practice. Yes. That's a fact. That's the fact Okay. that as a developer you need to be in practice. An interview game is totally different thing than your practical of doing the job. It's Yes. totally different thing. The thing is apply as much as you can. जो भी जितना आप apply कर सकते हो और tell everybody भाई मुझे जो है वो इस पर्टिकुलर कंपनी में है, इस जगह पे जॉब चाहिए या इस कंट्री में चाहिए, और आप अप्लाई करते रहो, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते रहो. और nobody wants to hire fresh grads in Pakistan. Not nobody, but mostly companies don't prefer fresh grads. So I was applying all the jobs. मैं recently I looked into my LinkedIn as well. So LinkedIn पे I had applied around like 500 jobs. तो मैंने अप्लाई कर दी थी. Assalamu alaikum and hello everyone. This is Syed Abdullah and you guys are watching Techcast by Syed. Today I'm here with another special episode. और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी और स्टार्स वर नॉट अलाइनिंग और कभी सुमैर भाई की अवेलेबिलिटी का इशू बन जाता था या मेरे एंड पे कुछ मसला हो जाता था बट आई एम ग्लैड कि ही इज़ हियर सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू वेलकम सुमैर टू द शो सो सुमैर वेलकम एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम. Thank you so much for inviting. दिस इज माई फर्स्ट टाइम एटलीस्ट कि पहली बार मैं कहीं ऐसे फोरम पे जो है वो अपनी इंसाइट्स या जो भी डिस्कशन विल गोइंग टू डू वो मैं शेयर कर रहा हूँ. अदरवाइज आई हैव बीन वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, बट इंशाल्लाह दिस इज अ बिट डिफरेंट. हम कन्वर्सेशन करेंगे, वी आर टॉकिंग, सो लेट्स सी हाउ इट गोस. Yes. So yeah, thanks. Thank you so much for taking out the time, and it's a pleasure to have you. So without wasting any time, we're gonna start with your Sumer general introduction or and more sort of professional introduction. कि आपने किन किन companies में या किन किन stacks पे अभी तक काम किया है, कैसा आपका experience रहा है, and all that. सो अगर मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करूँ, कमिंग इनटू द टेक इंडस्ट्री, तो इनिशियली व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था अराउंड 7-8 क्लास में, तब आई वांटेड टू बिकम अ सीए. क्योंकि उस Okay. वक्त सीए की सैलरीज ऑब्वियसली, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते, तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट सैलरीज व्हेन चूजिंग अ Yes. प्रोफेशन. अगर आप बिल्कुल छोटे ना हो 2-3 क्लास में, तो फिर आपको फौजी, डॉक्टर, ये सारी चीजें बननी होती. बट एट द टाइम आई वांटेड टू डू सीए, बट माय मदर वाज अ टीचर इन माय स्कूल, तो शी Okay. सजेस्टेड मी टू डू science instead, rather than going to commerce in 9-10. So I opted Right. for science. तो 9-10 मैंने साइंस किया, एंड देन उसके बाद जो है वो कॉलेज आई ऑप्टेड फॉर प्री इंजीनियरिंग. उस वक्त तक कोई ऐसा कुछ कंफर्म भी नहीं था कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है. बट आई वाज नॉट इनटू कॉमर्स दैट मच एट दैट टाइम जब मुझे कॉलेज मैंने ज्वाइन किया. बट आफ्टर कॉलेज लाइक फर्स्ट ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर में मेरी परसेंटेज भी बहुत कम आई थी. आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ए प्लस स्टूडेंट था. Okay. आई हैड ए प्लस इन मैट्रिक एज वेल. बट फर्स्ट इंटर सिंध बोर्ड से मैंने दिया था, सो आई डिडंट गेट मच numbers, good numbers. On the other side, my two elder sisters both were A grade students, और वो बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी medical students. So मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं आते. I was disheartened. But at that time I decided कि CS was a big thing. I had a Mm-hmm. lot of friends or seniors in my community जो कि CS कर रहे थे, particularly from Fast University. और उस वक्त Okay. DHS UFA भी जो है वो new आई थी, so that name was also there. But these were the two names which were popular in Karachi. If anyone in that college years, they would remember that these two were the prominent among getting the CS degree. So first year में I decided to do CS definitely. Okay. तो Mm-hmm. फिर जब पास के एडमिशन क्राइटेरिया को देखा और सारी चीज़ों को देखा, तो परसेंटेज was not a thing for getting an admission. तो सेकंड ईयर में I didn't go for percentage. मैंने इतना प्रिपेयर नहीं किया था, but I did prepare well for my aptitude test, which I did good, because mostly it was mathematics and physics and those kinds of stuff, IQ और वो सारे questions होते, which I do good, uh, which is very helpful in computer science as well. Professional Yeah. life में ज़्यादा, पढ़ाई के point of view से कुछ subjects में yes it helps, but particularly in practical life when you are working as a developer, business analyst, या फिर even as a SQA, तो skills help करती है. बिल्कुल. So I got admission into Fast University. जिसमें it was the only university I applied for. Okay. I belonged to a middle class
family. So my parents had to save a lot to get my admission done and all the fees and everything, because at that time वो उस वक्त और अब भी it's a very hefty amount Yes. in every 6 months. So Yes. my तो मैं जो है वो सबसे basically I am the eldest, sorry, I'm the youngest in my Youngest. family. I have two elder sisters. Both were in medical. Both were very bright students, toppers, but not me. Until I realized that I will be good in professional life rather than academics. So Mhm. in my first semester, I got failed in basic electronics, which is kind of physics, Right. velocity और वो सारी चीजें. My basics were very wrong in physics, so I failed in that subject. Mhm. So my parents got to know, my family got to know we fail हो गए थे, but they said do it your way, but at least pass all the subjects. तो उस दिन के बाद से फिर मैंने फोकस मेरा जो है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ों पे था. आई लाइक डूइंग प्रोजेक्ट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में आई वाज द कोडर, कि मैं जो है वो चीज़ों को कोड करता था सारी चीज़ें. इवन Right. प्रॉब्लम सॉल्विंग और इस तरह के जितने भी असाइनमेंट्स होते थे, आई यूज्ड टू, व्हिच आई लाइक्ड मोस्टली, जो प्रोग्रामिंग वाले हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, so आई यूज्ड टू डू दैट मोस्टली. और Okay. उसके बाद yeah, we graduate. I graduated from Fast University 2018 में, Mhm. which was not the very best time to graduate, but not the worst as well. Yes. क्योंकि market, it wasn't that booming. Kareem Kareem was already there. They had recruited a lot of people from Karachi Fast campus prior to the year we graduated. Mhm. But mostly fast graduates का ये होता है कि they get their jobs, at least 90% of them get their jobs around June July. By the end of July they get before us. But हमारे टाइम पे वो threshold it got to November. We our last exam, हमारे exams almost May या June तक end हो जाते हैं. We are free. We can start our job around June time. But Right. at our time, it got like, I had few friends who didn't get a job until November, December, because market was going to slow down. और वो अभी भी जो है वो है obviously, because fresh graduates अभी universities भी बहुत सारी हो गई हैं, and then there are a lot of fresh graduates as compared Yes. to that जब हम, और nobody wants to hire fresh grads in Pakistan. Not nobody, but mostly companies don't prefer fresh grads. So like, so in part of my getting a job, it was mostly reference. Okay. I got a job. I got my first interview without reference. That was without reference. Right. Just I placed my CV, and I think it was TPS. Okay. I gave interview over there, uh, which did which I did well in my terms, but Mhm. they didn't select me at that time. Uh, but I wasn't worried. मैं बिल्कुल भी मुझे नहीं था कि, because there was no at that time there was no financial responsibility on me, घर Okay. के point of view से. और I graduated at the age of 21, while Right. every other person was 22 and above. तो मुझे था कि यार वैसे ही मैंने जो है ना वो जल्दी ग्रेजुएशन कर लिया, तो मैं थोड़ा आराम से मुझे जॉब मिले, तो कोई मसला Right. नहीं, ये टाइम एंजॉय कर लेते हैं. क्योंकि when you get into professional life, you won't get a month or 2 months vacation leave or anything like that. Yes. तो मुझे था कि यार, और फिर ऑब्वियसली बात है कि पैसा आ रहा होता है, तो वो अच्छा लगता है. देन यू कैन नॉट गो इनटू अनपेड लीव और वो सारी चीजें. तो आई थॉट यार 1-2 महीना ये आराम से कर लें, उसके बाद जॉब लग जाए. So I Right. wasn't that much worried. घर से भी Mhm. कोई प्रेशर नहीं था. So there was one reference which I got. So it was a fairly small company, एक startup kind of, या फिर एक छोटी company थी, where I Yeah. started. Um, Mhm. uh, Company's name was IdeaBox. It was a nice company. They the interview went very well. I did very good in the interview. Or interview me, they said they want to hire me on the Right. spot. तो Right. which was very good for me. Even I had to ask कि मुझे 2 दिन तो दें कि मैं सोच के जो है वो आप लोगों को बता दूं. So but I thought it was a good move, because technical point of view से they were good. They were doing very good. वहाँ tech stack भी बहुत अच्छा था. They had PHP, React Native,
.NET, a lot of stuff in .NET as well. Okay. तो मेरे लिए बहुत अच्छा था. I the interview was on Friday. And I joined. I think I joined around next week. उसी के अगले week I joined. So I got my Fine. job after 1 month of my last exam. So एक महीना जो है वो process में लगा था to get a job, which I thought कि वो 2-3 महीना चला जाए, but वो गया नहीं, unfortunately. So I started my job over there. Initially they were very happy, the company was very happy, I was very happy as well. uh, मैंने उस वक्त वर्क फ्रॉम होम का तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, सो आई हैड टू गो Yes. देयर एंड कम्युनिकेट और वो सारा सोशलाइज विद एवरी अदर पर्सन इन द कंपनी. बहुत छोटी सी फैमिली, इट वाज अ वेरी small company, so we had like 10-15 people, but everyone was very socializing और उस तरीके से, and I was a kid for them. So, they were very excited. They had I was the first Fastian that joined there, so they were very excited at that point of view. By Fastian has come, so I was doing good. I started working on .NET over there, but Right. within 15 days, I got a job from Contour. Very nice. So Contour में I had given my test before, which I didn't do good because test was very very hard. Okay. उस वक्त मुझे अभी भी याद है कि my manager that made the test, who made the test, उसने he said it was a very hard. So out of 30, the highest was 18, Okay. and मेरे जो है वो around 14 थे, I guess. So they were going from top to bottom in terms of getting the interview and everything. तो मेरा नंबर थोड़ा लेट आया था. Mhm. But when I went there, so there was one small interview, one small test, technical test. I don't know कभी भी होता है नहीं होता, but there was one technical test in counter. So वो बहुत Okay. छोटा था, easy था. I did that. Interview was good. I was very confident because मेरे पास job थी. अब तो और confidence आ गया था. So whatever I was doing, they asked about it. Whatever I Yeah. was doing and वो जो basic questions होते हैं and everything, I did that. मैंने सब कॉन्फिडेंस और बहुत सारी चीजें थी विच आई डिडंट नो, तो मैंने मना कर दिया, आई डोंट नो दिस स्टफ और व्हाटएवर एक्सट्रा, एंड दे सेलेक्टेड मी. सो आई गॉट एन ऑफर एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर. और at that time Contour never hired a junior software developer position. So there were 6 junior software developers hired in a division called IDS in Okay. Contour, Okay. and we 6 were the first ones जो कि as a junior software developer hire हुए थे. Right. Other than that, Contour used to hire on internship kind of stuff, but वो भी other than us, जो कि हम full time permanent position पे थे, there were only two people working as a trainee. उससे पहले कोई Right. fresh grads hiring कुछ नहीं होती थी. Right. And Contour was fairly new, like they were around, I guess when I joined it was not more than 500 in all, uh, two offices. There were Two two, officers. Lahore Yes. and Karachi. Islamabad was not there at that moment. Uh, it was August 2018. So yeah, it started from there. मैंने जो है वो वहां से काम स्टार्ट किया. Counter was fairly different. Product based company. There was legacy as well, and all of us, all 6 junior software devs were put into legacy as well. कि हमें Right. legacy पे, because सारी business logic ही legacy पे ही थी, so we had to work in legacy and everything. But the processes that were being followed, the agile processes और वो सारी चीजें वो सीखने का बड़ा, it was very different. Right. और हम जब अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते थे इवन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो वी वर अ बिट डिफरेंट इन वर्किंग कि भाई प्रॉपर स्प्रिंट्स चल रही है एंड एवरीथिंग. सो आई गेन दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर अच्छा खासा. देन आई गॉट an offer from a fairly small company Mhm. again. So, and that position was for a technical lead. So, Right. and that was after about a little less than 2 years into Contour. तो Right. दो तो साल आपने नहीं कहा हुए मैं थे. जूनियर से सीधा लीड बनता हूँ अब. हाँ. सो सो उस वक्त जो है ना वो, it was again a bet, a risky bet, कि Mhm. even I told my managers in Contour कि it's a bet I'm taking. मुझे Contour से कोई मसला नहीं है, मुझे IDS से कोई मसला नहीं, मुझे अपनी जॉब से भी कोई मसला नहीं. It's a risk that I'm taking and I'm willing to take it. I might be Right. right, I might be wrong, but there Okay. would be learnings in this. So Yes.
So my managers and even directors in Contour were saying, hey, it's not a good choice to make. No, it's okay, I'll take it. क्या हो गया? अगर अगर fail भी हो गए तो भी क्या हो गया? Again, financially, I had no responsibility at that moment. कोई risk मैं अगर ले भी लेता तो मतलब उस वक्त भी क्या ही होता? I बिल्कुल। was confident enough कि even though it didn't turn out well, I can get a job within a month. कि मेरे जो है वो connections इतने अच्छे थे कि I can get a job because fast alumni and everyone is very good with the referencing and everything. So यस। और उस वक्त market was booming, like it was very good in terms of tech और experience के लिए obviously it gets easier. So it was a company named Evolux. मैंने वहाँ join किया था technical lead. Uh, वहाँ पे they were working on an ERP for insurance companies. राइट। So we had to create an ERP from the scratch. So I was hired specifically for that. तो मैंने जो है ना वो वहाँ से सारे प्रोसेसेस जो मैंने सीखे थे कॉन्टोर से आई applied over there. टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितनी चीजें बिकॉज इन व्हेन वी आर इन कॉन्टोर we were put into a lot of trainings as well कि हमने ओके। हमें because there was a lot of free time as well initially. तो डॉटनेट की बहुत सारी सॉलिड प्रिंसिपल्स क्लीन आर्किटेक्चर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हमने की थी. इट वाज फॉर्चुनेट कि हमारे जो मैनेजर थे he forced us to do those trainings. So all that I put into practical in that job. uh, it lasted around 8 months. So और ये pre COVID. So basically I joined them in February 2020. ओके। Sorry, 1st March 2020. Within ओके। 20 days we were into lockdown. यस। बिल्कुल। तो तो एंड द टीम वाज फेयरली न्यू एज वेल कि मेरे बाद ही जो है वो जितनी भी हायरिंग हुई थी विद इन दोस एवरीवन वाज ज्वाइनिंग इन दोस टाइम कि वो शुरू में ही राइट। ज्वाइन हुए थे. सो आई हैड लाइक 4 to 5 डेवलपर्स जो कि बैक एंड फ्रंट एंड दोनों चीजें देख रहे होते थे. सो आई आई अप्लाइड अ लॉट ऑफ क्लीन आर्किटेक्चर और क्लीन कोडिंग डॉटनेट की सारी चीजें एंटिटी फ्रेमवर्क गिट नॉट गिट फ्लो बट जो पीआर का हमारा प्रोसेस होता है पुल लेकर बिकॉज राइट। यस। अगर हम देखें व्हेन वी सी स्मॉल कंपनीज ऑपरेटिंग तो वहाँ इतना फीचर ब्रांच और पुल रिक्वेस्ट और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो नहीं पता होते लोगों को which बिल्कुल। is वेरी बेनिफिशियल कि हम जब काम करो तो एक प्रोसेस है वो हमें हेल्प ही करता है. सो आई अप्लाइड ऑल दोस थिंग्स ओवर देयर. इवन CI/CD भी जो है वो कुछ हद तक मैंने इम्प्लीमेंट करवाया था, खुद भी राइट। किया था, डेवलपर से भी करवाया था. तो इट वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर मी एंड ऑल द डेवलपर्स. बट the only setback was that there was miscommunication with the management, or I wasn't happy with the management ओके। about how they were doing the things and everything other than राइट। technical stuff. ओके। So I decided to part ways with them. It was हम्म। becoming a bit toxic. हम्म। So I decided to part ways, and then there was again some open position in Contour within IDS. So राइट। so I called one of my colleague who was still working there. हम्म। He asked my manager there, okay, Sumair is asking to come back. Uh, so and that all the whole process started, and then there was no technical interview, nothing. I had already all the training, वो सारी चीजें मुझे तो पता ही था प्रोडक्ट के बारे में. So it was very easy to. So within a month, I again joined Contour, and after joining Contour, the next day I was working. I was into doing development, picking stories ग्रेट। from the board and everything, because obviously I knew all the things and everything. सो So यू मूव्ड बैक टू द सेम टीम, राइट? same team, everything same. So, but this time I was more into .NET stuff rather than the legacy, because ओके। .NET का काम बढ़ गया था, legacy का काम जो है वो कम हो गया था. So I was more into .NEट stuff this time. So then I again started working over there. I learned a lot of things. वहाँ then again I had a very good project manager जिसने ओके। मुझे सारी एजाइल की चीजें सिखाई, because he was very good at what he was doing. So I learned a lot over there. Then I was promoted to senior software developer ओके। in Contour. I think it was within 3 or 3.5 years of my career. So it was राइट। again a jump as well. Because normally 4 5 साल से
कम पे काउंटर में सीनियर की पोजीशन उस वक्त तक तो नहीं था, आई डोंट नो अबाउट नाउ, but it was more based on merit because we were the six developers that I talked earlier, so all six were there, Okay. and all six were promoted around the same time to senior devs positions. Right. And a- after some time, after being promoted to senior devs, after some time, every individual one was um, leading their team. Four were leading their team. One was still a senior software developer. One had left Okay. because of studying abroad. तो Right. चार जो है वो the one that were hired back in 2018, fast forward to 2021, they were all tech leads in their team, including me. Right. So in Contour, I got a lot of experience being a technical lead again. तो वहाँ पे जो है ना वो it was more into architecture and people management और task management, project manager के साथ सारी चीजें, and but I wasn't getting much development. So it Okay. was around like 20-80 का difference था. I Right. was getting only 20% of development and then 80% of technical management kind of stuff. तो मुझे उस वक्त realize हुआ कि और market की जो है वो demand भी बहुत tech based बढ़ रही थी. So I thought it's not a good time to be in the management because there might not be very much positions for management in the near future. So I True. switched back to being a developer. I told my manager. My manager was very nice. He understood what I was saying. So Right. he said, "Would you be okay with working under your colleague who became the technical lead with you?" मैंने बोला मुझे क्या मसला है, मुझे डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट के अलावा आई एम गुड विद Right. एनीथिंग, and I know how what I am doing and everything. So I started working in the same team. वहाँ पे I got hands on React Native. Okay. Uh, in the last 6 months I was there in Contour. Okay. Uh, then I left for an opportunity here in United Kingdom, Mhm. particularly Wales. Wales is a country in UK. I didn't know mm, at that time. मुझे नहीं पता था. England, Scotland, I knew, but I didn't know about Wales. But yeah, it is a country that many people know. Okay. So I'm currently working here. So basically, where I work is it's it's part of NHS. Mhm. NHS is National Health Service for England. It's kind of a private entity, but it's it's totally uh, public as well. So basically, all the fundings comes from government. Right. So it's a healthcare system. So basically, पूरे UK का healthcare is managed by NHS. And the part I am the department I am part of is digital health and care waves, where we cater all the IT or tech requirement of whole Wales. Like Wales just continue बात कर रहा था, so उसकी जितनी भी tech requirement है in terms of healthcare, so we give them all the things and everything. So and the product that I am working on particularly, it's it's kind of a CMS system. So you Okay. can it's kind of there's a WordPress है हमारा. So it's Mhm. it's a WordPress, but we have like custom plugins and everything based on the requirement. So Right. every website that NHS hosts in Wales, that is being built by our product. So it's a lot of websites and everything. Okay. So that I'm working on. If we talk about tech stack, sorry. So tech stack में currently I'm working on Adobe Cold Fusion. Okay. It's it's kind of not it's not legacy, but it's not popular as well. Adobe Cold Fusion is if I would explain it, so it's kind of a front end language जहाँ पे you can use HTML and Okay. then direct query the database from HTML within HTML using Adobe Cold Fusion, and then Right. use that in HTML to populate your data and everything. Okay. So somewhat similar to ASP.NET. Correct. जो CS Okay. HTML files होती थी हमारे पास, so somewhat Yes. similar to that one. So I'm working on that for past 1 year. Yes, it has been 1 year.
It's nice. It's different. So yeah, So that's yeah, how I it is. think Pretty that's long. quite yeah a healthy introduction और एक काफी detailed introduction जो है आपने दे दिया. So as you mentioned, I want to expand on your current job and the journey you had, you know, getting this job because I know you were working in a very good company in Pakistan as well. So the next question would be, ke, what were the steps for the job preparation? Right, a lot of people try to get a job out of Pakistan. You know, तो आप क्या जो है वो steps ले रहे थे या क्या process follow कर रहे थे when you were looking for the opportunity? So for opportunities, I never stopped looking after graduation. मैंने कभी Okay. जो है वो but after graduation I didn't look for opportunities abroad mostly. मैं इतना ज़्यादा नहीं देखता था. Mhm. Well, I didn't know कि वो fresh grads और वो इतने entry level पे anyone would hire anyone from Pakistan or even outside their country. So I didn't apply that much outside of Pakistan, but I didn't stop applying at all. मैंने कभी Right. जो है ना वो नहीं रोका कि I would stop applying. मैं interviews देता था. I had interviewed a lot of local companies, a lot. Um, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी. सो आई वाज वेरी इनटू कि भाई वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट, बट आई वुड डू द इंटरव्यू एंड एवरीथिंग. तो Right. I did a lot of interviews in Pakistan. After coming back to Contour, like around 3 years into my career, तो Mhm. मैंने abroad भी opportunities देखना शुरू कर दी थी. ठीक है. Um, I applied multiple times in Amazon, Mhm. uh, where you can, because they don't have any Amazon, they don't have any restrictions on your nationality mostly. तो अगर आप किसी particular countries में आप apply करो, uh, I think it was one of them was in UK Cambridge. मैंने apply Okay. किया था. I did gave few tests as well. So every 6 months you can apply. अगर आप test देते हैं and then if you fail, you can apply after 6 months again. So I think I applied 2 to 3 times, but none of the time I was fortunate enough to get the interview. Other than that, I applied a lot of companies outside Pakistan and got a few interviews as well. Okay. I got one interview in Agoda. Okay. It was based in Bangkok, Thailand. Um, I got interview in Kareem as well, which was local. But Okay. till last stage I got that. Like I got it, but like last stage, man, I think there was a cultural round or something. So where I wasn't able to get into. So I was very prepared on interviews and everything. और even मुझे बड़ा शौक था इन चीज़ों का, तो I went into my even Contour के भी मैंने मैनेजर को I told my manager I want to get into the interview game. So मुझे ऐसा इंटरव्यूअर भी जो है ना वो आप डेवलपर्स हायर करते हो, मुझे even don't let me ask any question, but I'll just be keep quiet. me in. Right. हाँ, तो I was very into that much because I know okay, I knew okay, you need to be in practice. That's Yes. a fact. That's the fact बिल्कुल. that as a developer you need to be in practice. An interview game is totally different thing than your practical of doing the job. It's Yes. totally different thing. So I was applying all the jobs. मैं recently I looked into my LinkedIn as well. So LinkedIn पे I had applied around like 500 jobs. तो Okay. मैंने apply कर दी थी. So yeah, I applied and then uh, I I applied for student visa as well. Like in Canada, I applied because I wanted to get out of the country. मैं बहुत पहले से ही decide कर लिया because both of my sisters were not in Pakistan as well. So I Okay. I thought मुझे भी एक time के बाद I thought I'm not going to be in this country. I need to go out. तो Right. and that is before like अभी तो this thing is very big. Like every other person who wants to go out. But I think it was around 2 3 years ago. 2 years ago, I guess. So I applied for student visa in Canada as well. Uh, दो बार, both of the time it got rejected. I was very frustrated about that thing. फिर उसके बाद एक बार ऑस्ट्रेलिया में applied for a student visa. Okay. That got rejected as well Okay. on on no grounds. Like
people who were getting their visa approved, और मैं अपनी प्रोफाइल देख रहा था, it was very disheartening कि but with वही होता है कि जहाँ ऊपर वाले ने आपका लिखा है, his बिल्कुल। plans is different, and it's better in your cause always. So I बिल्कुल। had that thing in my mind. So राइट। यूके के लिए so UK was never in my mind कि UK is an option as well. ओके। मैंने that thing I told you about Amazon के अलावा I had to any company in UK. I was applying to more Canada, Australia because उनका PR process is fairly easier यस। और इस moment पे around the time 2022 and 2023 after getting the student visa rejection, I told my family and everyone कि I am going to go after getting a job there. मैं अब student और इस तरह के options I am not going to explore anything. राइट। तो 3 बार दिल टूट गया, अब और नहीं तोड़ सकते. तो I was applying to a lot of jobs. फिर one day my mother's family friends came to our house. ओके। Um, so my fiance was there as well. So we had a, ओके। like जैसे हमारे यहाँ होती है ना दावत होती है. They were बिल्कुल। they were they came in dawat. So fortunately he was in UK. He came to Pakistan for a visit, and then ओके। he asked me, "Okay, what are your plans ahead?" So I told him, "मैं jobs देख रहा हूँ, and we want to move out eventually." So he said, "कि UK maybe there are a lot of jobs." ओके। I thought मैंने बोला I don't know. So he said there is this NHS. तो मैंने कहा, NHS, yes, they do sponsor, but mostly वो uh, healthcare professionals who got them because there were a lot of nurses after COVID. There was a lot of nurses, doctors going to UK for into NHS was they needed healthcare professionals after COVID because COVID में बहुत हद तक जो है वो healthcare system यूरोप साइड का expose हो गया था and they are not able to cater all the things and everything. So but he said कि look for an opportunity. Maybe they might have some developer positions. राइट। So fortunately, my fiance at that time हम्म। uh, looked for the job, sent me the link. I think there ओके। were only couple of links, हम्म। and I applied, and I got the test and interview call. Even ओके। that was after a month of after a month applying into the job. So apply ओके। करने के भी 1 महीने बाद. So they have ठीक a है। lot of processes and everything because it's a government kind of entity. So I got a test and an interview. The test was pretty basic and I wasn't prepared at that much. मतलब वो उस level पे I wasn't prepared because वो kind of CS not CS but HTML, CSS, JavaScript और .NET का भी बिल्कुल basic controller structure वो उन चीज़ों के ऊपर था, तो I wasn't राइट। that much prepared. ओके। Or there was no guidelines कि what to expect and what not to expect. I didn't do good. So interview in test, so it was total failure in the test. So or they had this kid even after giving the test, you would get an interview. मतलब interview my interview was already scheduled ओके। before even giving the test. So both were the same at same stage. So they had to take my interview, even my test was bad or anything. So in the interview there were 3 more people ओके। or तीन अंग्रेज. uh, my manager, who is my manager right now, he हम्म। was very kind and at that time उन्होंने बहुत अच्छे से cater किया in terms of कि मुझे किस तरीके से जो है वो सारी चीजें explain की initially. They explained all the things and everything, and then ओके। they started the interview में they ask questions related to software development. So basically scenario based questions थे, ओके। but it was somewhat like there was a software development problem in each scenario which I had to answer. So कहीं solid का कोई एक principle लग रहा होता था, so I had to explain that. कहीं ओके। agile, कहीं
गिट का या इस तरीके से सारी चीजें। सो आई बिकॉज आई हैड दैट प्रैक्टिस इन माय कंपनी जैसे कॉन्टूर में एंड इवन विद माय प्रोजेक्ट मैनेजर एट द टाइम, तो मेरी बहुत राइट। प्रैक्टिस थी इन चीज़ों की। एंड आई वाज द टेक लीड एज वेल, एक पर्टिकुलर बहुत अच्छे खासे टाइम के लिए। तो आई नेल्ड द इंटरव्यू। कि इंटरव्यू में मैंने सारी चीजें, आई answered each and every question with confidence and with correct answers. So, so after some time, the recruitment manager, recruitment or the one who was doing recruitment and the technical manager both were same. So he approached me directly. He said he scheduled a call, and I thought he's just going to say, "Okay, sorry, we are not," because they had to give feedback. Uh, Job description में it was mentioned that they would give the feedback if they राइट। don't select you. I thought कि वो just feedback के लिए जो है he's calling. I didn't tell anyone. मैं अपनी family में भी I didn't tell anyone. I didn't even tell in my family कि मैंने apply किया other than my fiance at that time. ओके। So तो मुझे फिर जो है वो the manager called and he said that the position was for software developer slash senior software developer, whichever they were going to get. ओके। So they said your test was not good, so we cannot offer you senior software developer position, but we can offer you software developer position. I said, राइट। uh, तो मैंने फिर, और अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। मैंने कोई रिसर्च नहीं की कि भाई जो सैलरी दे रहे हैं वो अच्छी है कि नहीं है, या फिर वहाँ के क्या एक्सपेंसेस। आई डिडंट इवन नो कि कार्डिफ वाज इन वेल्स एंड वेल्स इज इन यूके। मुझे नहीं पता था बिकॉज आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। वरना द नेचर आई हैव, मैं जब भी किसी कंपनी में अप्लाई करता हूँ और मेरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था, तो मैं उस कंपनी का कच्चा चिट्ठा खोल लेता हूँ हर जगह से, ऑनलाइन एवरीथिंग, यहाँ वहाँ रेडिट एंड जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिले। तो बट आई डिडंट डू दिस टाइम, बट आई राइट। गॉट एन ऑफर। बहुत लंबा प्रोसेस था। आई अप्लाइड इन जुलाई ओके। एंड आई ज्वाइंड देम इन दिसंबर, so it was like राइट। 6 months process. मतलब तो पाकिस्तान से काफी डिफरेंट था वो, जिस तरह पाकिस्तान में होता है इंडस्ट्री। या नहीं, बिल्कुल डिफरेंट था बिकॉज इज अ पब्लिक फेसिंग कंपनी, तो उनका प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। दे हैड टू, और एंड देन दिस होल वीजा प्रोसेस एज वेल। तो और आई डिडंट रिजाइन अंटिल आई गॉट माय वीजा इन माय हैंड। तो राइट। मैंने किसी को नहीं बताया, आई गॉट माय ऑफर एंड एवरीथिंग। इसकी भी एक छोटी छोटी तो नहीं, हाँ छोटी स्टोरी है। सो व्हेन आई गॉट माय वीजा, तो इट वाज 9th November। 9th November इज द पब्लिक हॉलीडे, राइट? यस। वो अल्लामा इकबाल डे होता है, राइट? बिल्कुल। सो 8th November को out of nowhere, we had a layoff in our IDS division. ओके। तो उस वक्त आई गेस they laid off around 15 people, which was दैट्स अ गुड big. नंबर। यस, दैट्स अ गुड नंबर Yes, इन टर्म्स ऑफ लेबर। everyone was a bit worried and everything. And next day morning, I wake up and then see the notification email IV that your passport is ready to collect. Then I went there, I got the visa. Next day I told my manager, मैनेजर ने मजाक करते हुए मुझे बोला भी कि if you would have resigned earlier तो शायद 2-3 लोग बच जाते, but that was just nice for him to say. But there was nothing to hold, so Contour had nothing to to hold me back because it was an opportunity from outside the country. ग्रेट। तो So इसमें yeah. अब मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह आपने ऐड किया कि इट्स नॉट इजी टू गेट अ जॉब इन अ डिफरेंट कंट्री, राइट, और काफी लोग इसको Mhm. ट्राई भी करते हैं। तो एंड यू मेंशन के 3 गोरे लोग और भी थे उस क्यू में, या compete कर रहे थे उस पोजीशन के लिए। सो आपको क्या लगता है किस चीज ने आपको हेल्प किया टू स्टैंड आउट? मतलब आपको क्या फील होता है क्योंकि आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ एंड देन यू वर इनटू द इंटरव्यू, सो दैट वाज दैट Mhm. कॉन्फिडेंस और हैंड्स ऑन नॉलेज, क्या चीज थी जिसने आपको हेल्प आउट किया स्टैंड आउट करने में? For this particular interview, I guess the confidence, और I had nothing to lose, तो मुझे था कि यार टेस्ट तो खराब हुआ है, बट इस चीज में मैं कॉन्फिडेंट था कि यार इससे रिलेटेड, यानी ये सॉलिड प्रिंसिपल्स हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जितने भी प्रोसेसेस हैं, सारे प्रिंसिपल्स हैं, सारी चीजें, क्लीन आर्किटेक्चर हो गया, एजाइल हो गया, इन सब में मैं बहुत तेज हूँ, सो आई कैन नेल ठीक इट। है। तो ओके। वो एक कॉन्फिडेंस था, प्लस
द थिंग आई मेंशन कि आई नेवर स्टॉप्ड गिविंग इंटरव्यूज, तो मैं बहुत प्रिपेयर्ड था इंटरव्यूज के लिए। तो इंटरव्यू वाज वेरी इजी थिंग फॉर मी कि मैं राइट, तो आई नेवर स्टॉप्ड। सो बेसिकली वही है कि if I was already applying for jobs, and obviously when you apply, at least अगर आप 100 जॉब अप्लाई करोगे तो 5 में तो इंटरव्यू आपको कॉल आएगी, and then you would यस, select in one or maybe not even one. तो so मैं mostly जो लोग I have seen in Pakistan, people doesn't apply to jobs. They would they are mostly into के 3-4 jobs apply की and then यार जवाब नहीं आ रहा, छोड़ो यार, क्या कोई कंफर्ट हमें जोन वाला रखता नहीं, and मसला है थोड़ा they सा। हाँ, और सेल्फ डाउट भी नहीं, इवन फॉर दोज अप्लाइंग इनटू आउटसाइड द कंट्री, वो सो बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इंटरव्यू इज वेरी लो राइट नाउ। सो व्हेन प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो कि भाई अगर आपका 1% चांस है, तो अगर आप एक बंदा है, फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला अब्दुल्ला इज अप्लाइंग टू 100 जॉब्स, तो उसको राइट, एक इंटरव्यू कॉल आएगी बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज 1%। राइट, सुमैर हु इज अप्लाइंग टू 1000 जॉब्स, तो मुझे तो 10 आएंगे ना, आई हैव अपर बिल्कुल, हैंड यस, just by applying to more jobs. Then यस, I am giving 10 interviews. अब 10 में से मुझे एक में जॉब ऑफर आएगी, अब्दुल्ला who is only going one interview, and वो फिर मतलब वही है कि if you are going to get a job or not, 50-50 है वो एक में ही। तो the thing is apply as much as you can, जो भी जितना आप अप्लाई कर सकते हो, और tell everybody भाई मुझे जो है वो इस पर्टिकुलर कंपनी में है, इस जगह पे जॉब चाहिए या इस कंट्री में चाहिए, और आप अप्लाई करते रहो, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते रहो। जस्ट सेइंग, अगर आप दूसरों को ये बोलते रहोगे यार कि कोई मुझे जॉब नहीं मिलती यार, मैंने इतनी जगह अप्लाई किया है, आस्क दोज हु हैव ऑलरेडी डन इट कि भाई किस यस, तरीके से अप्लाई किया है, जिस तरह हाउ यू हैव डन इट, तो उन उसको आपने कॉपी करना है। आई थिंक आई रेड इट, आई रीड अ बुक, मुझे याद करना पड़ेगा, नेपोलियन हिल की बुक थी, इट वाज वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट बुक्स दैट आई रेड, हाउ टू गेट रिच नाउ, आई आई थिंक थिंक द थिंक रो राइटर एंड वाज रिच इस नेपोलियन। तरह करके कुछ या नाम था उसका। या थिंक एंड ग्रो रिच, यस यस, डेफिनेटली इट वाज अ मस्ट, इट इज अ मस्ट रीड फॉर एवरीवन इन, जो किसी भी अपने लाइफ के किसी भी स्टेज पे, इट्स अ मस्ट रीड। तो उसमें देयर आर 13 रूल्स इन दैट बुक, तो उसमें से एक रूल है कि लुक एट द सक्सेसफुल पीपल, कि भाई जिन्होंने किया हुआ ऑलरेडी, उनसे पूछो और उनका पाथ को कॉपी करो, आप सीख लोगे, आप पहुंच जाओगे उन तक। दैट्स द थिंग, बिल्कुल, हार्ड वर्क, और ऊपर वाले पे भी आप भरोसा रखो, ऊपर वाला आपको, जाहिर सी बात है कि योर हार्ड वर्क वोंट विल ऑलवेज पे ऑफ। तो रोनाल्डो का भी आई थिंक इन इन वन ऑफ इंटरव्यू से इसके, आई हैव दिस होल प्रोसेस कि मेरी तरह मेहनत कर लो, जितनी मेहनत मैं करता हूँ यू विल बिल्कुल, रीच देयर, इट्स नथिंग नथिंग डिफरेंट, और वो कोई इसमें कोई मैंने कोई मिरेकल नहीं किया हुआ, आई एम नॉट सम प्रॉफिट और समथिंग। सो राइट। वही चीज है कि डूइंग इज द थिंग। सो जब आप इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करते थे, सो आप जस्ट चीजों को रीड आउट या रिवाइज करते थे, या साथ साथ लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन चीजों की भी प्रैक्टिस करते थे? सो मैनी मैनी इंटरव्यूज आर डिफरेंट, लाइक हर कंपनी का एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। सो बिल्कुल, आई हैड आई हैड practiced a lot on HackerRank. ओके, Lead code पे I didn't, but ओके, HackerRank पे I did, which is more or less similar. यस, मैं करता था HackerRank पे, and I had given those interviews as well, जिसमें वो HackerRank टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, समटाइम्स हो जाते थे, समटाइम्स नहीं होते, तो उसमें इट्स बिट डिफरेंट, बट जब जब मेरा इन इन लास्ट 1 year और सो बिफोर कमिंग हियर, तो उस वक्त आर्किटेक्चर, सॉलिड प्रिंसिपल्स और इस तरह की चीज़ों के भी जो है ना वो क्वेश्चंस बहुत आते थे इंटरव्यू क्वेश्चन में, तो मैं हमेशा प्रिपेयर करके रखता था, आई हैड प्रिपेयर्ड अ फुल नोटबुक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैं वो रिवाइज कर लेता था इंटरव्यू से पहले, बिकॉज आई वॉज गिविंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, तो मैं उस इंटरव्यू से पहले रिवाइज कर लेता था, बट ना वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी, रिवीजन भी की थी सारी चीज़ें। Other than that, there was one thing. Yeah, I started a course as well, जो कि DSA के ऊपर था, but ओके, डेटा but I स्ट्रक्चर्स एंड didn't complete. एल्गोरिथम, हाँ हाँ, ओके, exactly. So I downloaded a Udemy course, वो कहीं torrent वॉरेंट से डाउनलोड करके मैंने जो है क्योंकि गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, आपको DSA और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा यस, आती थी, बिकॉज बड़ी कंपनीज बहुत बल्क में हायर करती हैं, दे डोंट केयर अबाउट योर नेशनलिटी और एनीथिंग।
यस। क्योंकि उनके पास सारे प्रोसेस होते हैं एवरीथिंग, वो फंड्स एंड एवरीथिंग। तो उस वक्त बहुत कंपनीज हायर करती है, बट गेटिंग इनटू दोज टाइप ऑफ कंपनीज आपको ये डीएसए और इन चीज़ों के ऊपर बहुत हाई लेवल नॉलेज होनी चाहिए। तो आई स्टार्टेड दैट, बट उसकी आई गेस दिस इन दिस पोजीशन नीड ही नहीं पड़ी। बट या it's like keep on working on your technical skills out, like interview technical skills, और उसको आपको ब्रिज भी करना है विद वॉट एवर यू आर वर्किंग, बिकॉज एवरी कंपनी वांट्स टू नो कि भाई आपको पता तो है, लाइक यू नो सॉलिड प्रिंसिपल्स, यू नो क्लीन आर्किटेक्चर, बट आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया है बिल्कुल। इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर वर्किंग ऑन, क्योंकि दे वांट टू नो द रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। यस, कोई रियल या प्रॉब्लम दैट आपने क्या सॉल्व किया उस चीज से। Yes, yes. So I prepared those things as well कि भाई मैंने for example I had created a solution, तो एक दो solutions थे जो कि जिसमें मैंने बहुत काम किया था, तो I written down everything around those problems and everything, तो कि राइट। कभी इंटरव्यू में मुझे उस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, I am well prepared. ठीक है, ठीक है, ठीक है सुमेर, इसको अब हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। और आपने पाकिस्तानी मार्केट में भी काम किया, आपने काम किया, अब यूके में भी आप काम कर रहे हैं, तो की डिफरेंसेस आपको क्या देखने को मिले दोनों टेक मार्केट्स में, मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर, और मतलब लोग किस तरह के हैं, तो इसको जरा डिफाइन करें। हम्म। अच्छा ही इंटरव्यू थोड़ा उर्दू और बाइलिंगुअल में ना, तो माय मैनेजर वोंट बी सीइंग दिस इंटरव्यू जो अभी के, so I can say whatever I want. तो या। तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्किंग कल्चर है, इट्स काइंड ऑफ लेड बैक एटीट्यूड। ओके। यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स है इट्स 7:30, यानी कि आई हैड टू वर्क 7:30 आवर्स, लाइक 7.5 घंटे मैंने काम किया, अदर देन द ब्रेक। ब्रेक आपका आधे घंटे का हो गया, 8 घंटे। पाकिस्तान में इट्स 9 आवर्स, 1 आवर ब्रेक, 8 आवर्स वर्किंग, तो वो आधा घंटा यानी कि 2.5 घंटे तो वैसे। ठीक उसमें है। भी यू कैन टेक फ्लेक्सिबल लीव और बहुत सारी चीजें, बट द एटीट्यूड इज लेड बैक। ऐसा नहीं है कि यार टाइट डेडलाइंस हैं और आपको काम करना है, इवन दो इफ यू आर वर्किंग हो एक्स्ट्रा आवर्स, तो उसमें यू कैन गेट पेड, और कोई आपको फोर्स नहीं करता। एवरीवन इज ओके। लाइक सुबह स्टार्ट करेंगे, सुबह जल्दी स्टार्ट नहीं करता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग आई हैव सीन। आई डोंट नो इट्स अबाउट जस्ट डेवलपर्स और नॉट, बट यहाँ यहाँ पे भी वही है, 9:30, 9:30। ठीक बिकॉज है। आई हैव सीन इन कैन, बिकॉज जब मैं काउंटर में था, द डिवीजन आई वाज वर्किंग इन, तो हम कैनेडियन कंपनी के साथ काम करते थे, देयर वर एम्प्लॉयज इन कनाडा, तो दे राइट। वेक अप अर्ली, लाइक 7-8 बजे वो उठ जाते थे। लेकिन यहाँ पे दे स्टार्ट एट 9-9:30, फिर वो 5-5:30 तक काम करते हैं। ऑल ऑफ देम वांट्स टू वर्क फ्रॉम होम, किसी को भी ऑफिस नहीं आना। नो राइट। वन वांट्स टू कम टू ऑफिस। अदर देन टेक भी जो है वो ऑफिस का कल्चर, वर्क फ्रॉम का कल्चर है, बट काइंड ऑफ ओके। हाइब्रिड सिचुएशन में, राइट। बिकॉज नॉट मेनी कंपनीज हैव resources to cater all the staff कि वो एक साथ सारे आ जाए, so it's kind of hybrid। तो वर्किंग कल्चर ऐसे ही है कि सुबह 9 से 5 काम किया, 5 बजे के बाद no one would even bother you to send you a message or anything, और बहुत वेलकमिंग है in terms of helping you, even though यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों के आपस में जब हम बात कर रहे होते हैं, तो देयर इज अ रेस इन सेइंग थैंक यू। सो इवन दो मैंने ओके। आई नीड टू से थैंक यू, तो वो सामने से वो बोल देंगे, तो इट्स लाइक दैट कि हर कोई, इवन इन माय टीम, लाइक जब भी हम शाम में ऑफ करते हैं, तो वी सेंड अ मैसेज ग्रीटिंग, हैव अ गुड इवनिंग, और कोई अगर छुट्टियों पे जा रहा है, सो हैव अ लवली वीकेंड, और वो सारी चीजें हैं। इट्स अ राइट। वेरी नाइस कल्चर ओवर हियर। पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान में इट्स अ डिफरेंट कल्चर, विच इज वो उस टाइप का कल्चर। अच्छा, जो डिफरेंस भी है ना, I'll share why the difference is there, but पाकिस्तान में we are kind of, पाकिस्तान में you will see in Karachi you would see a different culture, in Lahore Punjab side you would see a different culture, कराची में it's everyone is workaholic, but I was fortunate enough to work in Contour, तो वहाँ हमारा जो है वो it's still work life balance होता है, we have a lot of things to do और वो सारी चीजें, and there is no uh, restriction on getting leaves, और वो सारी चीजें बहुत easy है, which is not very common in other companies। तो राइट। इट वाज नाइस, बट एक जो डिफरेंस जो मुझे लगा, वो लगा कि यहाँ पे जो है ना, वो लेड बैक एटीट्यूड और स्लो, दे आर वेरी स्लो इन वर्किंग, हम बहुत एजाइल हैं, so we get a lot of things done quickly। So I asked someone over here who migrated here like 40-45 years back, who was the only one to answer this। तो बोलते हैं कि he said
हम यानी कि पाकिस्तान इंडियंस बांग्लादेशी we have been their slaves at some time and यस they have ruled us, so their attitude is a bit different कि वो उन्होंने हमेशा they are the like होता है ना कि घर में वो वाला बच्चा है जिससे से कोई काम नहीं कराया कभी, तो दे आर उनका नेचर ही ऐसा है अगर वो थोड़ा सा भी काम कर लेंगे उनको लगेगा बहुत काम कर लिया है। और हम जो है वो बहुत वर्कहॉलिक हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नथिंग इन कि वो गुलामी वाला वो चीज़ हमें नजर नहीं आती यहाँ बिल्कुल भी, कि हम भी सेम लेवल पे ही हैं वेर एवर बिल्कुल देयर इज नो रेसिज्म नथिंग, बट जस्ट इन पॉइंट ऑफ के वो काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर बिट लेस प्रोडक्टिव कुछ कुछ राइट केसेस में। राइट 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 जबरदस्त। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे फ्लिप करेंगे सुमेर के, लेट्स से अब जिस तरह हमें पता है मोस्टली लोग पाकिस्तान से अब वो कहते हैं कि यार बाहर जाना है, अब एक वो जिसे कहते हैं ट्रेंड सा आ गया है। और इवन आई थिंक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में मुझे लगता है शायद आपकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, आपको चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है और ये सारी चीज़ें। तो जो पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आपको सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या बंच ऑफ एडवाइसेस देंगे कि इन चीज़ों पे फोकस करें या इन चीज़ों का कंसिडर करें, या अगर इवन अभी भी कहीं पे काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों को अपनी प्रायोरिटीज बनाएं? सो हाउ वुड यू एडवाइस दोज हम्म, पीपल? हाँ, सो बेसिकली इफ आई सी, मैं बोलूँगा कि tech is just one part of your portfolio of yourself, when you go into any other company, यहाँ आप apply करते हो, tech is just one part, and I would say out of 100% just 20 or 30% कि tech के basis पे आपको जॉब मिले। तो उसके अलावा जो प्रोसेसेस हैं एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है या वॉट एवर अकम्पलिशमेंट्स और वो सारी चीज़ें, सर्टिफिकेशन, इवन सर्टिफिकेशन एज वेल, या आपकी जो पर्सनल लर्निंग्स हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट कि भाई कहाँ राइट की मार्केट कैसा है, सो वो एक बेसिकली इट्स अ रिसर्च और स्टडी आपने करनी है वेर एवर यू वांट टू गो, अगर आपने बाहर जाना है। आई थिंक राइट नाउ बाहर जितनी भी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल इवन इन मार्केट्स है, इवन यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप साइड, वहाँ पे देर इज अ वेरी स्लो हायरिंग राइट नाउ, बिकॉज जॉब्स इतनी नहीं है जितनी आज से 1 साल पहले थी राइट या 1.5 साल पहले थी। इवन इन यूके देर आर नो स्पॉन्सर्ड जॉब, जिस जिस जॉब पे मैं आया हूँ स्पॉन्सर्ड जॉब पे, जिस टाइप ऑफ वीजा पे मैं आया हूँ, देर आर नो स्पॉन्सर्ड जॉब इवन फॉर द स्टूडेंट्स who have studied here, they are even not getting sponsored job because नहीं है मार्केट में। इमिग्रेशन इज वेरी स्लो। जितने भी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल even in UK they have targets of lowering the immigration. राइट Canada have targets for lowering the immigration because of the reason कि they don't have the capacity for healthcare, for housing, to cater all the immigrants. But there are some hot markets. One of them is Saudi, uh, Saudi Arabia. They have this neon project. उसके अलावा यूरोप मार्केट अपार्ट फ्रॉम यूके, वहाँ पे आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल गोइंग देयर, जॉब राइट सीकर वीजा पे भी a lot of people are going there, वैसे भी there are a lot of jobs there, तो टारगेट करे, सी के where people are getting their jobs, talk to people जिनको जॉब मिली, जैसे I have talked to a lot of people जिन्होंने मेरे से मेरी जर्नी के बारे में पूछा, हाउ आई गॉट जॉब एंड एवरीथिंग। आई हैव टोल्ड देम व्हाटएवर आई फील और जो मेरी इनसाइट्स हैं, देन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल with who have got jobs in different parts of the world, तो टॉक टू देम, उनसे पूछो कि उन्होंने किस तरीके से किया, क्या स्किल सेट है, and reach out to a lot to people, or even organization, because I think there are a lot of organizations, companies जो कि particularly relocation पे काम करती हैं, राइट even in Germany as well। वो क्या करती हैं कि आपको ऑन बोर्ड करती हैं and then they improve your skill set, CV भी एक ऐसी चीज़ है जो कि you need to keep on changing, ट्राई न्यू थिंग्स, क्योंकि कभी कभार सीवी की वजह से भी जो है वो जॉब का बड़ा, ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपका वही है ना कि एटीएस क्लियर करना है,
Yes. ATS जो यूज होता है, सो ATS बिल्कुल। के लिए आपकी सीवी, और उसको आप चेंज करते रहो, मेक डिफरेंट सीवीज। मैं तो हर आई गेस हर 6 महीने में या कुछ कुछ अपनी सीवी में ट्राई करते रहता हूँ, चेंजिंग इट, स्टडिंग इट, कि किस तरीके से। तो वही है कि वट एवर यू एस्पायर उसको अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, एंड देन यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, और वट एवर बेस्ट इन यू, तो जो भी आपके लिए बेस्ट होगा दैट यू विल अट्रैक्ट। बट या, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। और ब्लेम गेम, आई थिंक वो ब्लेम गेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू जस्ट कीप ऑन सेइंग कि यार नहीं होता, नहीं होता, कुछ नहीं, नेगेटिविटी, इट इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर। बी पॉजिटिव, अप्लाई करते रहो, टेक एक्शंस, तो यू विल लैंड समवेयर बेटर। राइट। और बिल्कुल मतलब टेक में तो जो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है कि जो रिजेक्शन है वो तो एक परमानेंट पार्ट रहता ही है हमेशा से। मतलब हम्म। आप इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो ही जाते हो, सो उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। उससे आप सीख लें, और हम्म। उस चीज को लेकर डिसअपॉइंट ना हो कि भाई मैं स्टक हो गया हूँ या मुझसे चीज क्लियर नहीं हो रही है। बिकॉज वो सारे एक्सपीरियंसेस जो है वो स्टैक होके वो कहीं पे आपको अच्छी जगह लैंड करा ही देंगे। करेक्ट। So we have crossed our 1 hour mark. So I am gonna wrap this up, Sumair. आखिरी सवाल जो मैं अपने हर गेस्ट से करता हूँ और जो उन्हीं से रिलेटेड होता है कि विद दिस ऑल करंट नॉलेज जो आज आपके पास है, अगर आप अपना जर्नी दोबारा से स्टार्ट करें, लेट्स से कि आज आप ग्रेजुएट हुए हैं और ये वो सारा नॉलेज आपके पास है, तो क्या डिफरेंट आप करेंगे, या सब कुछ वैसा ही करेंगे जैसा आपने किया है? कुछ चेंज करेंगे, कुछ प्रायोरिटीज चेंज करेंगे, तो क्या होगा वो? इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि जो मेरी जर्नी रही है गेटिंग इनटू द टेक इंडस्ट्री और यस। जॉब से रिलेटेड, आई थिंक आई वोंट चेंज मच। बस वही है कि रिस्क, टेक रिस्क, डिसाइड करो व्हाट यू वांट, बिकॉज व्हेन यू नो व्हाट यू वांट तो आप उसको अपनी तरफ जरूर अट्रैक्ट करोगे। बट अदर देन दैट, आई थिंक I had a few changes back in 2019. So 2019 I switched all the social media off. मैंने अपना सारे सोशल मीडिया के जितनी भी सारी चीज़, I switched off everything like Facebook, Instagram, uh, ओके। everything. ओके। So and I started reading books, राइट। which was which I think was very late at the moment. अगर मैं सोचूं तो I would, अगर मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में I had watched a lot of web series, एवरी अदर वेब सीरीज आई हैड वॉच, बिकॉज जब मैं घर पे बैठ के लैपटॉप लेके बैठा था तो माय पेरेंट्स वर थिंकिंग कि मैं जो है वो, क्योंकि CS का बैकग्राउंड है तो फिर मैं कुछ काम ही कर रहा हूँ, बट आई वाज वाचिंग ऑल द मूवीज एंड एवरीथिंग। तो इफ आई हैड रेड बुक्स ओवर एट दैट टाइम, आई रेड अ फ्यू, आई थिंक वन और टू जस्ट, बट नॉट इनफ। तो वो आई वुड सजेस्ट एवरी इंडिविजुअल जो कि उस फेज में है, to read books, especially self-help books. यस। But if you can't, start with any book. I read a book recently. उसमें भी जो है ना वो the author said the same thing about reading books कि भाई आप कोई भी बुक, आप एक तो सेल्फ हेल्प बुक्स की तरफ आओ, बट इफ यू कांट डाइजेस्ट दोस, आप कोई भी पढ़ो, बिल्कुल। जो बुक नजर आती है, जो दिखती है, पढ़ो। इवन इफ यू लीव इट हाफ वे थ्रू, डजंट मैटर, बट डोंट स्टॉप। आई स्टॉप रीडिंग बुक्स। मैंने 2019 में स्टार्टेड, आई रेड अराउंड 10-15 बुक्स, फिर मैंने छोड़ ओके। दिया। 2 to 3 months बैक I was not happy with all the things I had here, because obviously when you come out of your country तो बहुत सारी चीजें, it's not all glitters। मैं अगर यहाँ आज बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान से था, it's not all glitters। I have left my parents over there, so यहाँ पे I don't have many friends to hang out with। I don't have that kind of a life I had there, because I'm building it from the ground now, basic से यस। start करूँ। I इट्स don't अ have a पेनफुल house, I don't, प्रोसेस। yes। तो बहुत सारी चीज़ होती है, and then the job as well कि वो the job I have doesn't doesn't pay very good amount of money, or it's not very I would say motivating for me, but
the motivation is that I get to be here, which is a country where lives matter, where Yes. other things are easier outside the work. So I've recently started reading books again. So Okay. I have this book. I don't know if anyone wants to read. थोड़ा सा I would require to give the context of this, क्योंकि ये लोगो देख के बहुत, Startup Nation. Yes, yes, yes. I know about yeah, this book. yeah. So yeah, many people talk about uh, Israel and Palestine, whatever the conflict is going on. It's disheartening as a human, uh, but we don't know a lot of things that has happened in the history because media is totally controlled. Media पे हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता चलती. This book, I I I started reading this book because I wanted to know about this whole thing Hmm. from a different perspective. It's not about the conflict or anything, but ये है कि इसराइल ने कैसे अपना state, they have been growing their IT industry for last 60 to 70 years, और वो बहुत, they have exponentially grown. So Yes. read books, it's a blessing. And audio books, I have read only one audiobook, but no, not audiobook, but read anything. So Yes. reading is the one thing. एंड जो आपने सेल्फ हेल्प बुक्स की बात की, आई थिंक एनीवन कैन, जो मैं 3 बुक्स तो हमेशा हर बंदे को रेकमेंड करता हूँ, वो ये है कि आप पावर ऑफ हैबिट से स्टार्ट करें, डीप वर्क पढ़ें, और रिच डैड एंड पुअर डैड तो आप लाजमी पढ़ें, क्योंकि वो आपको बेसिक फाइनेंसेस तो आपको ऐसे क्लियर करेगी कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदने लगेंगे, आप उसको देखेंगे Mhm. कि ये एसेट है या लाइबिलिटी है. Mhm. सो दिस इज द थिंग. So thank you so much, Sumair, for taking out the time. It was very very nice talking to you. और हमारा थोड़ा टाइम जोन डिफरेंस भी है, तो उसके लिए भी आपको थैंक यू, आपने टाइम Uh, निकाला. एंड द ऑडियंस विच आर वाचिंग दिस एपिसोड, मैं डिस्क्रिप्शन में सुमेर का लिंक्डइन जो है वो ड्रॉप कर दूंगा. यू गाइस कैन कनेक्ट विद हिम, और इवन कैन रीच हिम एज वेल. So thank you so much. अपना ख्याल रखें. Thank you again, Sumair, for your time. I will see you guys into the next episode. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.